हॅलो मॅम, आवाज येतोय का माझा? हॅलो 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 मॅम, आवाज येतोय माझा? हॅलो 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 मॅम, हॅलो 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 हॅलो, आवाज येतोय मॅम? Sangeeta, are you able to hear me?
Sir, आपको सुनाई दे रहा है मेरा? sir, I want to ask you something regarding tomorrow's class. बोलिए, कौन है ये? Who's this? Sir, आरुषि. पूछो बेटा. सर कल टाइम टेबल में दो क्लास दिखा रहे हैं, तो कल 2 क्लास है क्या? हमेशा 2 क्लास होती है, 1-1 घंटे की 2 क्लास होती है. Must be same. सर कल उदय सर का मैथ्स और फिर मनीष सर का भी इंग्लिश का दिखा रहा है टाइम टेबल में, फ्रॉम 2 o'clock मनीष सर का. सबको ऐसा दिखा रहे हैं क्या बच्चों? बताओ. Yes, sir. Let me check. ऐसा होना तो नहीं चाहिए. Let me check. Are you all able to see the screen? Yeah. Let me check with you only. Are you guys able to see my screen? Yes. चलो देखते हैं. Let me check in my system. Lectures, reports, lecture timetable. कौन सा बैच है ये? This is C01 SAT. Let's check. नहीं, it is 11:30 to 12:30 UP and then 12:35 to 13:35 UP. सिर्फ यही क्लास है. मनीष सर की क्लास दिखा रहा है वो आपको? Yes, sir, from 2 o'clock. One second, let's check. नहीं बेटा, कुछ गलती है. मनीष सर की तो कल कोई क्लास ही नहीं है अभी. चलो, आपका क्या नाम है? सर आरुषि. आयुषी का लेक्चर टाइम टेबल. What's your student ID? Would you know your student ID? Yes, sir. या नाम बोलो आपका. आरुषि गोस्वामी. आरुषि गोस्वामी. ये सबसे ऊपर वाला आरुषि नितिन गोस्वामी या कौन सा वाला No, है? sir. 5th one. ये वाला है. Yes, sir. लेक्चर टाइम टेबल. कल का आपका लेक्चर टाइम टेबल क्या दिख रहा है? नहीं बेटा, it's not showing. आपका लेक्चर टाइम टेबल इस 21st में 11:30 to 12:30 मैथ्स. टोफिल का बैच है क्या आपका? Yes, sir. Anybody here from 12th standard? टोफिल का तो ओरिएंटेशन है क्या? हो गया ना ओरिएंटेशन? Class चलो. कब से चालू होगा? आरुषि कुछ गलत है आपका. आप कहाँ पे देख रहे हो मेरे को बताओ. Would you share your screen with me? नहीं तो we'll do it after the class. अभी अपन क्लास टाइम नहीं वेस्ट करते हैं. Let's get started with the classes. अपन आप बाद में रुकिएगा and we will check. मेरे को तो नहीं दिख रहा है सिस्टम में कुछ भी जो आप बोल रहे हो. आप बाद में मेरे को शेयर स्क्रीन करके बताना, ठीक है? Yes, sir. चलिए, अयान क्या हुआ? आज आप ऑनलाइन आए हो? संगीता मैडम अपना वीडियो चालू करो, बात करो मेरे से. संगीता मैडम, ये फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है. ठीक करो आप इसको. अरे आपको अपने आप ठीक करो इसको. आपको मैंने बोला था ना ठीक करके रखना है. ये सब क्यों नहीं ट्रायल पहले करके रखते हो ये सब आप? नहीं, आपकी मेरे को आवाज नहीं आ रही है. आप अपना ऑडियो टेस्ट करके लो, उसको ठीक करके लो.
चलो ठीक है, अभी आप कस्टमर के साथ हो तो फिनिश विद द कस्टमर, डोंट आस्क द कस्टमर टू डू दैट, लेट द कस्टमर लीव, आप अपने आप बाद में करके लो इसको। 365 log in। चलो, we are now today doing session 6 कर रहे हैं क्या अपन आज? सेशन 5 मेरे कलीग कौन करेंगे? मनीष सर करेंगे। मैं आज कौन सा करूंगा? सेशन 6 करूंगा बच्चों में आज। हमने दोनों ने वी डिवाइडेड, मेरे नाम पे इवन सेशंस आए हैं और सर के नाम पे ऑड सेशंस आए हैं। सो मैं 2 4 6 8 कर रहा हूं। आई थिंक टुडे आई एम डूइंग सेशन 6। टेक्स्ट पर्पस, टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड पर्पस नाम है उस सेशन का। इज एवरीबॉडी विथ मी ऑन दैट? चलो लेट मी ओपन अप, मेरी रिक्वायरमेंट्स ओपन कर लूं मैं फटाफट से। D6, let's open this। ये खोल लेते हैं। अरे यार मैं ना नीचे आ गया, I have to get my, मेरी खुद की कॉपी तो लाया नहीं। Let me get that thing। चलो, is everybody able to see my screen? Is everybody able to see my screen? Yes, sir. Online students are also able to see my screen? Yes, yes, sir. चलिए, give me one more minute. I think I need to go up and get my my set of notes. Just a minute. Okay. चलिए, guys, let's get started with text structure and purpose. Chalo, let me see all of you. Arushi Goswami, Arav Ahuja, Yaksh Trivedi, Madhav, Ayan Warekar,
Tanush Reddy and Ayan Khatri. Chaliye, good. And here, what's your name? I think I'm seeing you for the first time. पहले आप offline आते थे या online आते थे? नहीं सर, मैंने आपसे एक क्लास अटेंड किया। एक्चुअली लास्ट क्लास में आपकी भी बता रहे थे तो मैं अटेंड नहीं कर। क्या नाम है बेटा आपका? आरुष ज़ादे। झाड़े। ओके। हाँ, लास्ट क्लास में आप नहीं थे। हाँ। हाँ, और मान्या बेटा नाम है ना आपका? मान्या, यस, मान्या श्रीवास्तव। आप लास्ट टाइम ऑनलाइन थे, आज ऑफलाइन आए थे। हाँ, तू तो हमेशा ऑफलाइन आया है। आई थिंक 2 of you have maintained offline. Good. चलो, एंड अयान आता था ऑफलाइन, आज अयान हैज गॉन ऑनलाइन। है अयान, क्या हुआ? सर वो एक्चुअली वो टाइम पे रेडी नहीं होता, उस सेमेस्टर आज ऑनलाइन अटेंड कर लूंगा क्योंकि आज दूसरा काम कर रहा था। हाँ चलो ठीक है। तेरा एडमिशन कंफर्म कर लिया तूने फाइनली? डीपीएस कर लिया या क्या लिया तूने? सर डीपीएस से कर रहा हूँ अभी। डीपीएस कर रहा है? यस सर। आप सब लोगों के भी, बच्चों के 11th स्टैंडर्ड के सबके एडमिशन कंफर्म हो गए या सुनो भी? जो 11th में है। हाँ, अन्य बेटा आपने कहाँ लिया फाइनली? रायन सांपड़ा में लिया। आप बाल भारती के स्टूडेंट थे ना? And now you move to Ryan Sanpada. अच्छा, you are in 12th. You started with TOEFL? Yes. 12th में और कौन है यहाँ पे इस क्लास में? SAT में anybody else? I think आप अकेले ही हो ना 12th बैच के? ठीक है, चलो। Guys, पहले I don't know आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं मालूम पड़ा? डिजिटल SAT का मार्च, ये जो अभी मई का अटेम्प्ट हुआ, इस मई के अटेम्प्ट में बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। फॉर आवर मे बैच, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, क्या नाम है उनका, वो फर्स्ट नेम थोड़ा सा अजीब सा है उनका, नियानिका, डीपीएस की स्टूडेंट है। शी इज गॉट 1460 इन द डिजिटल SAT। तो काफी सारे बच्चों ने लिखा था, बट शी इज द वन हु टॉप स्कोर्ड एट यूनिवर्सल ट्यूटोरियल्स। She got 730 and 730, 730 in maths and 730 in English. That's the top score which has come in the digital SAT. So वो एक न्यूज आपसे शेयर करनी थी। चलिए, let's get started। तो अब 2-3 चीज करनी है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं so that everybody over here can also see it। मैं बताइएगा बच्चों, आपको सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड पर्पस, ये है जो मैं सेशन आपके साथ अभी ले रहा हूं। इसको अब मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं। चलो, On the reading and writing section of your SAT, some questions will present a short text for you to read. How will you get questions? You will get short text to read. The question will then ask you to identify the purpose and structure of the text. So in this question, you will get these kinds of things. Are online students, फटाफट से अपनी attendance mark करा दो। Ayan, yes, you are present online. Yaksh, you are present online. Madhav Arora? Yes, sir, I am present. Present online. Arav Ahuja? Yes, sir. Arushi Goswami? Yes, sir. Tanush Reddy? Akshita Chile? I did not see Akshita Chile. Akshita, are you there? Akshita is absent. And we have Ayan Khatri present online. Sure, we've taken the attendance. So you will get questions which will essentially बच्चों ये 2 चीजों पे पूछेंगे। किन 2 चीजों पे पूछेंगे? अब इतनी सारी चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। So they will ask you things on purpose and they'll ask you on structure. ये 2 चीजों पे पूछेंगे। Annotate, clear all drawings.
चलो इसको एनोटेट नहीं करते हैं, लेट्स नॉट एनोटेट। Next, text structure and purpose questions are all about seeing past the surface of a passage. Meaning what does it mean? मतलब आपको सिर्फ surface पे बात नहीं करनी है. You have to go deep into the passage. You have to go deep into the passage. Instead of just what the text says, these questions want you to dig into why and how the text says it. So you don't have to just look at the surface. Get inside it, dig deep into it, and try to answer a question. Purpose के लिए why question को answer करो. Purpose के लिए कौन सा question pose करो? Why अपने मन में. And structure के लिए how. So these are the two questions जिसको आपको अपने मन में process करना. Are you understanding? बोलने के लिए purpose है, बोलने के लिए structure है, but आपको उसको कैसे देखना है? Why and how. So let's go to the first one. Purpose के बारे में बात करें. Purpose is the why behind the passage. Why did the author write it? What did they want to accomplish? What is the point? So why? Purpose is the why. A text purpose can often be framed using active verbs. This is written to explain, to illustrate, to criticize, to argue, to introduce. ये सिर्फ examples दिए हुए कि author, क्योंकि जब आप जब choices दोगे तो choices में लिखा हुआ आएगा the author is trying to explain, the author is trying to illustrate. So आपको उससे समझ में आएगा कि ये सही है या गलत है. So purpose क्या है? Purpose is the why. Purpose is the why, and you have to look for such kind of things. So इनसे आपको उसको समझने में ज्यादा आसानी होगी. Next, structure क्या है? Structure is how. So question is how the passage is written. So structure में you have to go and talk about the how to achieve its purpose. How does the text flow? इधर please understand. अब मैं क्या बोल रहा हूँ? How के बाद I am stressing on the word flowing. कि वो text flow कैसे कर रही है? Text के motion के अंदर ध्यान देना है. It's flowing from one idea to the next. Where does the author place emphasis? A text structure can often be described as sort of motion, and its focus is shifting from one place to another. इससे आपको hint मिलेगी कि ये हो क्या रहा है. समझ में आया? So अपन किस चीजों पे ध्यान देंगे? अपन why पे ध्यान देंगे और how पे ध्यान देंगे. Why में we will be interested in कि क्यों हो रहा है. How में we will be interested in कि emphasis कहां पे है, किसको वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है. और आगे बढ़ते हैं. It often helps to consider how the ideas within the text relate to one another. अब ये मोशन के साथ साथ एक और चीज जिसको आप देख सकते हो is, hey guys, आवाज अच्छी तरह से आ रही है मेरी? Are you able to hear me properly? Yes. Yes, sir. Online students? Yes, sir. चलो, good. Is the relationship, कई बार है ना, he's talking about two things, he's talking about one thing, he's not talking about multiple things. So you can, अगर दो तीन चीजें हो तो उसमें relationship के बारे में बात करो, motion के बारे में बात कर लो या relationship. So relationship में आपको कि is he in agreement, is he in disagreement, he is in agreement or he is in disagreement. तो अपन ने क्या क्या चीज की बात करी. So it has just one idea cause or build upon another. These relationships create a shape for the text which serves to support the goals of the author. So guys, let me very quickly summarize what I talked about. Let me very quickly summarize. और मैं अब board पे जाऊंगा. I would like to go on the board. So tell me if you are all able to hear me. And now you are able to see my board. दिख रहा है क्या? सर मेरी आवाज आ रही है? Yes, madam. Finally, अब आप दिखो भी हमको. हाँ सर. सर मैंने वीडियो ऑन कर दिया है. हाँ, तो अब आपको ये चीज अपने आप करने आनी चाहिए. मैंने मयूर को भेजा था आपके पास.
अगली हाँ बार सर, थैंक यू सर। पेरेंट्स बैठे थे ना, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे। नहीं वो ठीक है, क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये चीज आनी चाहिए खुद। हाँ हाँ सर। ये अगली बार ये मेरे को ये सब नहीं चाहिए कि आपको नहीं आता है, ठीक है? हाँ सर, ओके सर, ओके। हाँ चलो आप रहो अब। एंड हाँ हाँ सर। और मेरे को कुछ चाहिएगा तो मैं मार्क, अभी इसमें से एक बच्चा नहीं आया है, इसकी हाँ, एब्सेंट करो और उससे बात करो। हाँ, मैं अभी पेरेंट्स गए, मैं उनको ही कॉल करती हूँ। हाँ जी, कौन बच्चा नहीं आया मालूम पड़ा है आपको? हाँ देखती हूँ सर अटेंडेंस शीट, और मैं आपको उनको कॉल करती हूँ। ये अटेंडेंस शीट मेरे पास है, अक्षता चिल्ले नहीं आई है, टेक दी अटेंडेंस शीट और उसको कॉल करो। हाँ सर, हाँ सर। So let's get started, students. So what did we discuss? We are talking about text structure and purpose. तो मैंने किसकी बात करी? मैंने बात करी पर्पस। पर्पस में अपन क्या चीज पूछेंगे? अपन पूछेंगे क्वेश्चन 1। और स्ट्रक्चर में अपन क्या की चीज पूछेंगे? अपन पूछेंगे हाउ। और इसके अंदर अपन दो चीज का ध्यान रखेंगे। इसमें अपन ध्यान रखेंगे उसका मोशन का, कि ये एक जगह से, या फ्लो का, कि कैसे वो फ्लो हो रहा है। और दूसरा अपन ध्यान रखेंगे उसकी रिलेशनशिप, वो एक दूसरे में एग्री कर रही है या डिसएग्री कर रही है। अगर ये दो चीज का अपन ने ध्यान रख लिया तो ये बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो दीज आर द टिप्स फॉर सॉल्विंग दीज काइंड्स ऑफ सम्स। ठीक है, अब सो पर्पस में वाई, स्ट्रक्चर में हाउ, ये सब करेंगे। लेट्स नाउ अगेन गो बैक टू दी सम। तो अब मैं इधर से स्टॉप शेयर करता हूं, वापस शेयर स्क्रीन करता हूं। आई गो बैक टू माय दिस, शेयर स्क्रीन, दिस। चलो, इज एवरीबडी विथ मी ऑन दिस? दिख रहा है सबको? Yes, Yes, sir. चलो, क्वेश्चन कैसा दिखेगा? लेट्स सी द क्वेश्चन। चलो, फॉर एवरीबडी दिस इज द क्वेश्चन। The following text is from Charlotte Perkins Gilman's 1910 poem, The Earth's Entail. No matter how we cultivate the land, taming the forest and the prairie free, no matter how we irrigate the sand, making the desert blossom at command, we must always leave the borders of the sea. The immeasurable reaches of the windy wave wet beaches, the million-mile long margin of the sea, which choice best describes the overall structure of the text? Now, he is not interested in knowing the purpose. He is interested in structure. How? He is interested in how. So, he is interested in the structure. Guys, अब मैं board को भी simultaneously on करूंगा, so that you guys are with me on this. एक second रुकिएगा. Let me do the board. Are you able to see my board, बच्चों? yes, sir. चलो, अब स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे, हाउ इज द मोशन फ्लोइंग? सो लेट्स रीड, पोएम पढ़ना चालू करते हैं। द अर्थ्स एंटेल, नो मैटर how we cultivate the land, taming the forest and the prairie free, no matter how we irrigate the sand, making the desert blossom at command, we must always leave the borders of the sea. So he is talking about सबसे पहले land, then he is talking about desert. What he says, we should leave the sea. Is he talking about, he is also talking about land, forest, desert. He says, इनको कैसे भी करो, but you need to leave the sea. Is that the message? We must leave the borders of the sea, the million-mile margin of the sea.
बस इतनी सी बात बोल रहा है। He says इसके साथ do whatever you want, do whatever you want, do whatever you want, but leave the C. Is that right? So structure, we are not talking about the purpose. उसने purpose नहीं पूछा है, उसने अभी हमसे क्या पूछा है? Structure. तो अब the speaker provides examples of an admirable way of approaching nature and then challenges the approach. इसमें क्या missing है? A option में क्या missing है? हाँ, challenge तो कहीं पे बोला ही नहीं है, कहीं पे कोई challenge दिख रहा है क्या? So no challenge. So no challenge तो हमको ये और हमको structure चाहिए. Which choice best describes the overall structure of the test? We are not interested in the purpose, not the why. We are interested in the how. तो ये नहीं. B. The speaker describes attempts to control nature and then offers a reminder that not all nature is controlled. The speaker describes attempts to control the nature. Yes, land, forest, desert. Do whatever you want. Then offers a reminder not all nature is controllable. C को ये ठीक लग रहा है मेरे को, आया ना? चलो C. The speaker argues against interfering with nature. He argues, कहीं पे कोई argument दिखा क्या? And gives evidence supporting this interference. हमको कोई evidence तो C के बारे में कोई evidence नहीं. The speaker presents an account of efforts to dominate nature and then cautions that such efforts are only temporary. The speaker presents an account of efforts to dominate nature. Yes, ये dominate nature का account है, है ना? Correct? पहला part सही है. And then cautions that such efforts are only temporary. इन efforts को temporary उसने कहीं पे भी नहीं बताया. उन्होंने कोई नई चीज को बोला उसको मत dominate. इसमें क्या गलती है? कि ऐसा नहीं कहा है कि लैंड में वापस प्रॉब्लम हो जाएगी, फॉरेस्ट में कुछ वापस प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है? सो ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है. कौन सी चॉइस सही है? आया समझ में? हाँ, वी आर फोकसिंग. अब लेट्स अंडरस्टैंड हमने इसको कैसे अप्रोच किया. लेट्स ध्यान क्या रखें हम. हाउ टू अप्रोच. आइडेंटिफाई करना है, समराइज करा. तो देखो मैंने यहाँ पे समराइज कर लिया था तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था. मैंने पढ़ के 2 मिनट में लिख लिया था कि यार ये हो रहा है, डू व्हाटएवर यू वांट, लीव द सीट. तो चीजें बहुत. और फिर मैंने क्या किया था? टेस्ट द चॉइसेस. डिड आई डू इट दिस वे? मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या किया था कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन पर्पस, ही इज इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चर. तो व्हाई नहीं हाउ. हमने व्हाई आंसर ही नहीं करा. डिड यू अंडरस्टैंड कि ये करना क्या चाह रहा है? नहीं, वो नहीं अपन ने बोला. क्यों चाह रहा है वो नहीं बोला. क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है. डिड यू अंडरस्टैंड? तो भी ये एलिमिनेट करना बहुत इजी हो गया था बिकॉज अपन ने पहले आइडेंटिफाई करा, फिर समराइज किया और फिर चॉइसेस टेस्ट करें. वाज इट सिंपल? अब चलो आगे बढ़ते हैं. और क्या चीज का ध्यान रखना है? यू हैव टू स्टे स्पेसिफिक. Stay specific. Eliminate choices that broaden or blur the other. देख इधर ये लोग blur कर रहे थे आगे. Broaden और blur कर रहे थे. They were talking about फालतू में challenges वगैरह की बात कर रहे थे जो हमने कभी बोली ही नहीं. हम उसकी बात कर रहे थे. तो अगर next be strict. Choices and structure questions often break the text into 2 parts. तो दोनों पार्ट एग्री करने चाहिए. Make sure that description of both parts of the text are accurate. जैसे अपन ने लास्ट चॉइस डी करी थी, उसका पहला पार्ट सही था, सेकंड पार्ट गलत था. सेकंड पार्ट में क्या गलत था? He was saying those efforts are temporary. Land, forest and were not temporary. वो अब उनके भी सी के बारे में बात. So you have to make sure that all parts should be correct. So be strict. कई बार आप टेम्प्ट हो जाते हो, अरे यार पहला पार्ट तो सही है तो आप आंसर सही करते हो. No, be strict. What is it saying? Make sure that the description of both parts of the text are accurate. If a choice correctly describes the first part of the text but doesn't feel quite as accurate for the second part, eliminate that.
Every part of the answer needs to be accurately described. Are you understanding? तो मैं ये इसका ये पार्ट पढ़ रहा हूँ. Is everybody understanding? ऑनलाइन के बच्चों को समझ में आया क्या? Yes sir. अच्छा, lean on transitions. कई बार ये शब्द मिलेंगे आपको अंदर. ये अपन आगे वाले एग्जांपल्स में बताऊंगा. However मिला, therefore मिला, तो अपन को स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है इसका मतलब क्या. करेक्ट? तो अगर वो है, इसका नहीं है एग्जांपल इधर, तो चलिए. सो आगे बढ़ते हैं. सो आई थिंक इज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. सो लेट्स गो बैक टू द क्लासवर्क एक्सरसाइज. अब अपन इसको बंद करते हैं. लेट्स ओपन क्लासवर्क एक्सरसाइज. Who's Madhav? Yes, sir. बेटा Sir, I'm not able to start my video because there's a power cut in my area. नहीं, मैं नहीं अलाउ करूंगा ये क्लास में. You need to make sure that you are हमेशा ऑन हो. Sir, if I start my video only, sir, I'm using a torch now. हाँ तो चलेगा ना, मेरे को ऐसे दिखने दे तू. Okay, sir. ठीक है. नहीं तो क्लास नहीं अलाउ करूंगा मैं. तू दिख रहा है तो अच्छा दिख रहा है या सुंदर दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है, तेरे फेस पे एकदम ग्लो आ रहा है. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्लासवर्क एक्सरसाइज. अब इधर अपन क्लासवर्क एक्सरसाइज. डज एवरीबॉडी हैव अ क्लासवर्क एक्सरसाइज इन फ्रंट ऑफ यू? या किसी को कोई चाहिए सॉफ्ट कॉपी? सबके पास है. सेशन 6. तो अब अपन इसमें से कौन से पहले करेंगे? वी वुड बी डूइंग 1 2 4 9. वी विल बी डूइंग फर्स्ट अटेम्प्ट में अपन ये करेंगे. सेकेंड अटेम्प्ट में अपन करेंगे 3 5 6 7 एंड थर्ड अटेम्प्ट में हम करेंगे 8 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए. चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1. चलो ऑल ऑफ यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा गाइस, ये ना मैं इसको जरा ठीक करता हूं, बताना. आर यू ये बेटर ऐसे है क्या? इससे बेटर हुआ क्या बोर्ड? इससे बोर्ड बेटर हुआ क्या बच्चों? ऑनलाइन बच्चे विजिबिलिटी बताओ. बोर्ड की विजिबिलिटी बेटर हुई क्या? यस सर. इज द बोर्ड बेटर? आप लोग को दिक्कत हो रही है? दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है. आई थिंक दैट्स बेटर. या इससे छिलका आता है. एक्चुअली ये अंदर लगी रहनी चाहिए, तो बाहर लगा दी. तो ठीक है. चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1. गेट द आंसर्स. चलो मार्क करो. लेट मी सी एंड रेस्ट ऑफ यू गिव मी इन द चैट आंसर्स दो. चलो क्वेश्चन नंबर 1. तो क्या आंसर देगा आपने? आपने क्या करा? आपने क्या करा? मार्क करो उसको. पेंसिल नहीं है तेरे पास?
तो तू क्लास में बिना पेंसिल बिना पेन के आ गया है? प्रदीप, से पेंसिल और थोड़े न्यूज़पेपर क्लास में समझ में आया? न्यूज़पेपर कौन सा लेके आएगा? वो रिसाइकल पेपर में लिया हाँ, और पेन पेंसिल भी लेके आएगा। चलो ओके, हु विल टेल मी चैट में आंसर्स आएंगे सबके? इज दैट वेरी सिंपल? Everybody get the answer. Ayan, Aryan, I think all of you got the answer. Is that a very simple one? चलो कौन बताएगा? चलो let's start online. Why is A wrong? Answer is, अभी अपन 2 मिनट में करते हैं। आंसर क्या है? चलो आप बताओ। Why is A wrong? Why is option A wrong? So it's given that she feels uncomfortable. Uncomfortable शब्द से मेरे को एतराज है, आया ना? Uncomfortable तो कहीं पे है ही नहीं, करेक्ट? चलिए मैडम आप बताइए, why is option B wrong? सेंस ऑफ डायरेक्शन से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। चलिए व्हाट इज अबाउट ऑप्शन डी? व्हाई इज ऑप्शन डी रॉन्ग? फ्रेंडशिप के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो इसकी वजह से तो दी ऑप्शन सी इज राइट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? इज इट सिंपल सम? चलो क्वेश्चन नंबर 2 करना चालू करो। ऑल ऑफ यू स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत सिंपल है, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, सो यू विल अंडरस्टैंड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करना चालू करो। फंक्शन का क्या मतलब होता है? पर्पस। सो हियर द क्वेश्चन इज व्हाई। फंक्शन इज व्हाई। सो आइडेंटिफाई क्या चाहिए आपको? व्हाई चाहिए। चलो So only 3 people and the online people have answered as yet. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of you. 4 हो गए, अभी 3 जन और बाकी हैं। पांच, 2 जन बाकी हैं ऑनलाइन। चलो आपका भी बाकी है।
चलो लेट्स स्टॉप हियर, लेट्स सी किसने क्या क्या आंसर दिया। तो जिन्होंने आंसर दिया यस 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 यस, ऑल ऑफ यू डन द राइट आंसर। चलिए आप, डिड यू गेट द आंसर? नो यू डिड नॉट गेट द आंसर। व्हाट्स योर गुड नेम? ऋषिकेश। ऋषिकेश। सो ऋषिकेश इज स्ट्रगलिंग, तो कुड यू आइडेंटिफाई ऋषिकेश ये क्या है? दिस इज अ व्हाई क्वेश्चन, कुड यू आइडेंटिफाई दैट? बिकॉज उन्होंने फंक्शन पूछा है, फंक्शन इज अ व्हाई क्वेश्चन। व्हाई क्वेश्चन में हमको क्या करने का है? हमको वी हैव टू आंसर व्हाई, करेक्ट? कि ये वो क्या कर रहा है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द स्ट्रक्चर, व्हाई, ये वाला क्वेश्चन है। चलो अब इधर who all did not answer, यहाँ पे किसने नहीं आंसर किया? चलो लेट्स सी किसने नहीं आंसर किया। आई हैव 708 के बाद यक्ष ने आंसर करा, यान खत्री ने आंसर करा, आरुषि, तनुष, आरव, आहूजा। तो आई डिड नॉट सी माधव। माधव आपको भी नहीं समझ में आया? माधव No, sir. माधव और किसने नहीं किया? Who else did not do it? अयान वारेकर, आपका नाम नहीं है, इज दैट राइट? तो दो जन ने नहीं किया। सो वी हैव ऋषिकेश, अयान वारेकर एंड माधव, आप तीनों ने नहीं किया। तो चलो पे अटेंशन ओवर हियर। सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी टू आरुषि गोस्वामी। आरुषि, व्हाई डिड यू नॉट चूज ए? पहले बताओ ए क्यों नहीं चूज किया आपने? Sir, it does not caution the reader. करेक्ट। तो आपने पहले, अब ऐसे वाले का अपन ने क्या बोला था? डू यू रिमेंबर स्टेप्स? स्टेप सबसे पहले क्या थे? लेट मी राइट डाउन ओवर हियर। आइडेंटिफाई करो, फिर समराइज करो, और फिर टेस्ट चॉइसेस करो। ये तीन चीज करनी थी। तो आइडेंटिफाई क्या किया हमने? आइडेंटिफाई इट्स अ व्हाई क्वेश्चन। अब चलो वेरी क्विकली समराइज करें। समराइज में करेंगे तो क्या? पीपल हुज डिजायर इज सोनली फॉर सेल्फ रियलाइजेशन नेवर नो एनीथिंग व्हाट दे आर गोइंग, वेयर दे आर गोइंग, दे कांट नो। In one sense of the world, it is of course necessary to know oneself. That is the first achievement of knowledge. तो अगर summarize करेंगे अपन, self realization, self realization, ये मैं मेरे मन में अपने notes बना रहे हो आप। अब कोई डिटेल में बनाता है, कोई बहुत फटाफट से बना लेता है कि सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन इज टू नो वन सेल्फ, कि मेरे को अपने आप को मालूम करना है। In one sense of the world is to know oneself. That is the first achievement. But to recognize that the soul of a man is unknowable is the ultimate achievement of wisdom. कि हमको कुछ मालूम is soul is unknowable. इसको कोई मालूम ही नहीं कर सकता है। Soul is unknowable is ultimate. ये एक फैक्ट बता दिया। The final mystery is oneself. Oneself is a mystery. Oneself is मिस्ट्री। हम अपने आप को कभी भी मालूम ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोल रहे हो। oneself is mystery, the ultimate when one has weighed the sun in the balance, the measured the steps of the moon and mapped out the seven heavens star by star, there still remains oneself. तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है इस आंसर इसमें? ये सारी दुनिया नाप ली, आपको मालूम है सन किधर है, मून किधर है, स्टार्स किधर है, उनको नाम भी लिया, सब ढूंढ भी लिया, लेकिन आपको किसके बारे में नहीं मालूम पड़ेगा। चलो ठीक है, ये हो रहा है। अब there still remains oneself who can calculate the orbit of his own soul. तो ये सब कुछ बात कर रहा है सेल्फ रियलाइजेशन में, और इसमें फोकस है सेल्फ इज अननोएबल, oneself is oneself is myself। तो ये myself लिख दिया, इसको क्या लिखना था? mystery, oneself is mystery, ये बोल रहे हैं। चलो अब सबसे पहला पढ़ते हैं अपन। चलो आरुषि बोलो, इसमें सबसे पहले मेरे को it cautions the readers that text directions for how to achieve self knowledge and are hard to follow। कहीं पे मेरे को cautions दिखाई दिया क्या? सारे क्या थे? फैक्ट्स थे, स्टेटमेंट्स थे, कॉशन तो था ही नहीं, मेरे को नहीं दिखा। हार्ड टू फॉलो दिखा क्या कहीं पे? हार्ड टू फॉलो दिखा क्या कहीं पे? नहीं दिखा। समझ में आया? दैट्स व्हाई ए रॉन्ग। चलो आरव आहूजा, व्हाई इज बी रॉन्ग? बी ऑप्शन में क्या गलती है? In B, the definition of self knowledge, that's not there, and
popularity. That's what makes me use it. देखो डेफिनेशन तो उसने करने की कोशिश करी है. He is talking about the definition कि oneself is unknowable. तो I cannot say. तो this is one of those parts की जिसका पहला पार्ट तो फिर भी मेरे को कहीं दिखता है. oneself की definition कहीं पे दिख तो रही है मेरे को. Correct? He is trying to define oneself. Oneself is unknowable. Oneself is a mystery. ये सब बोल रहा है वो. तो पहला पार्ट. But what is जो मेरे को नहीं ठीक लग रहा है is unpopular. Unpopular की तो कहीं पे बात ही नहीं करी है. That's why this option is gone. Correct? तो ये ना देख समराइज कर लिया और फिर टेस्ट चॉइसेस करी तो टेस्ट चॉइसेस में खटखट आंसर मिला. चलो अब यक्ष त्रिवेदी, can you tell me why did you not choose option D? Sir, there is no mention about the doubts expressed in the text about value of self-knowledge. It speculates that some readers will share the doubts expressed in the text. उसने सिर्फ ये सब कुछ एक्सप्रेस किया है, लेकिन किसी रीडर के बारे में बात करी क्या? It speculates. एक तो स्पेक्युलेट कर ही नहीं रहा है, वो तो बोल रहा है कि ये ऐसे ऐसे हो गया, स्टेटमेंट्स दे रहा है. तो स्पेक्युलेशन से मेरे को प्रॉब्लम है. स्पेक्युलेशन मेरे को दिखा नहीं कहीं पे भी. स्पेक्युलेशन नहीं दिखा. रीडर्स के बारे में मेरे को कहीं कुछ नहीं दिखा. हाँ, वैल्यू ऑफ सेल्फ नॉलेज के बारे में भी नहीं दिखा. तो इसमें मेरे को सभी चीज में प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं मिल रहा है मेरे को यहाँ. अब अपन ऑप्शन सी पढ़ते हैं. It reinforces the text skepticism about the possibility of truly achieving self-knowledge. ये skepticism का क्या मतलब है? So, who can answer the word skepticism? Ayan Khatri, can you answer the word skepticism? Skepticism. Unsurety. ये शब्द अयान खत्री बोलो. Sir, unsurety, like not sure, not. मैं श्योर नहीं हूं, मैं स्केप्टिकल हूं, मैं थोड़ा सा घबराहट में हूं, मेरे को मालूम नहीं है. आई एम स्केप्टिक. यार मालूम नहीं क्या हो गया. सो वो बार बार बोल रहा है सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, लेकिन क्या नहीं मालूम पड़ेगा? oneself. So is he skeptical about oneself? Yes, he is skeptical about oneself. बड़ी जल्दी लेके आ रहे हैं. हाँ, यू बेटर बी सॉरी यार. चलो, तो ऑप्शन 2 समझ में आया सबको? सो आंसर सी इज करेक्ट. चलिए लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. चलो ऑल ऑफ यू स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 4. Researchers have found, वो वाला क्वेश्चन पढ़ना चालू करो. Again this is a function. Function मतलब y. This is y. चलो पढ़ो.
ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, where you have to pay attention to what it is asking. They get some answers. आपका आंसर आगे क्या? We are supposed to do 4. We have carried it. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 में से अब किसने दे दिया आंसर? यक्ष ने दे दिया आंसर, अयान ने दे दिया आंसर, आरुषि ने दे दिया, अयान वारेकर ने भी दे दिया इस बार। चलो सबने दे दिया। चलो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन। तो सबको आंसर मिल गए, इधर तो किसी को नहीं मिले। यहाँ पे she is still struggling. She did not got it. You get it? Yes. Did you get it? आपको नहीं मिला। तो we have ऋषिकेश who did not get it. तो चलो कौन, अब मैंने कहाँ तक किसने हेल्प कर दी थी? यक्ष, you had participated last time? Yes, sir. चलो अयान, let's start with you. ये क्या पूछ रहा है ये सवाल? How is it different then? इसके अंदर एक अंडरलाइन टेक्स्ट है। They are asking the purpose of their underlined text. ये टेक्स्ट क्यों है? They are not asking, एक तो सबसे पहले फर्क ये है, it is not talking about पूरे पैसेज की जरूरत है। They are only asking अंडरलाइन पार्ट के लिए भाई। तो सबसे पहले अपन यही काम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ये इसमें हो क्या रहा है। इस पूरे को अगर 2 मिनट समझेंगे, इफ ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड क्या हो क्या रहा है। एक कोई क्या मिला इनको, क्या मिला, नहीं क्या मिला, मोलार। मोलार मतलब टूथ मिला, किसी एक स्पेशीज का, एक एनिमल का टूथ कहीं से मिला। टूथ मिला तो उसके बारे में उनको क्या मालूम पड़ा कि यार ये जहां से मिला, अब मतलब वो मिला मतलब वो वहां रहता होगा। सो ही वाज प्रीवियसली थॉट कि यार वो सारे ऊपर ठंडी जगह पे ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई वार्मर जगह से मिला तो अब ये कंक्लूजन निकल रहा है कि ये लोग वार्मर में भी रहते हैं। तो एक टूथ की डिस्कवरी हुई। सो व्हाट हैज हैपेंड इज सम मोलार डिस्कवर्ड। कहां से डिस्कवरी हुई उस मोलार की? फ्रॉम वार्मर पार्ट, फ्रॉम वार्मर एरियाज। यस और नो? सो जो प्री नोशन था, कौन सा नोशन था? वो टूटा। क्या नोशन था? प्री नोशन broken. Yes or no? That they are all. Is that what is the identifier of this? Yes or no? ये अपने आइडेंटिफाई किया। अब हम चलो ऑप्शन ए, चलो अयान वारेकर बोलो ऑप्शन ए में क्या गलत है बताओ। Why is option A wrong? Sir. In option A, it says it defines a term used in the description that follows in the rest of the sentence. There is nothing like that. Definition. ये जो लाइन है, इस लाइन में लिखा हुआ है before the discovery the Denisovans were thought to have lived only at high altitude. ये तो एक फैक्ट प्रेजेंट कर रहा है, ये एक प्री नोशन प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या है? एक प्री नोशन है। इसमें क्या है? एक प्री नोशन है, हाँ या ना? There's a pre notion. Definition नहीं है, that's why A is wrong. Are you understanding? चलो next. अयान खत्री आपका टर्न। आप बताओ बी ऑप्शन क्यों गलत है? Sir, it says it emphasizes the main goal. It
does not emphasize, there is no main goal which it emphasizes. इट्स अ प्री नोशन, मेन गोल तो है ही नहीं, आया समझ में? तो मेन गोल मेरे को नहीं दिख रहा है ऊपर। चलो नेक्स्ट, तनुष रेड्डी, टेल मी व्हाई इज ऑप्शन डी नॉट करेक्ट? व्हाई डिड यू नॉट चूज डी? Sir, because there is no dismissing of the research as untrue, like mentioned. It dismisses as untrue. No, I did not understand your argument. It dismisses as untrue the research presented in the previous sentence. Is it dismissing? Yes, it's dismissing. Tanush dismiss कर रहा है, लेकिन कौन dismiss नहीं कर रहा है? So the previous one is not dismissing the new research. ये dismiss नहीं कर रहा है। इसके बाद वाला जो sentence है वो dismiss कर रहा है। Dismiss. So this fellow is not dismissing, and he is asking underlying portion क्या कर रहा है? Underlying portion dismiss नहीं कर रहा है। Is it dismissing? No, it's not dismissing. तो underlying portion क्या कर रहा है? Underlying portion C को समझेंगे तो it is providing the context that clarifies the significance of the information that follows in the rest of the sentence. Rest of the sentence में क्या आ रहा है? Rest of the sentence में आ रहा है कि वो warmer areas में भी रहते थे और ये वाले एरिया में नहीं, सिर्फ उधर ही नहीं रहते, इधर भी रहते। Is that right? That's why option C. Did you understand? चलो, तो अपन ने 1 करा, 2 करा, 4 करा. Let's now start reading question 9. चलिए students, start reading question 9. We'll start reading question 9.
1 2 3 4 5 6 7 7 में से क्या आंसर जाए आपके? आपका क्या आंसर आया? चलो इधर सबने आंसर करे, लेट्स सी इधर किस किस के आंसर आए। एक जन का आंसर बचा हुआ है। एक दो तीन, आर्यन वारेकर। आर्यन वारेकर, यू आर रॉन्ग। चलो सबके आ गए क्या? डिड एवरीबडी आंसर? कोई और बचा हुआ है ऑनलाइन में? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 सब आ गए। चलो ओके। चलो गाइस पे अटेंशन। कुछ लोगों को गलत मिला, 2 जन। सो पहले सबसे पहले हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई। कौन हेल्प करेगा मेरी? इधर तक अपन कहां तक आ गए थे? तनुष, you had answered the last question. Yes sir, D. आपने करा था आंसर? Yes sir. चैट में भेजा। माधव, फिर आपका टर्न है। माधव आपका टर्न है। माधव हेल्प मी। Yes sir. चलो माधव आपका टर्न है, प्लीज हेल्प मी कि ये क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई। ये जो लाइंस है, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है? Sir, in the lines, Sir Harold Cruz, sir, he criticizes the black. एक काम करते हैं, लेट मी डू इट द वे आई एम डूइंग इट। आई थिंक दैट विल बी इजियर। सबसे पहले मेरे को समरी बनाने दो। मैं समरी बनाऊंगा तो इसमें ये कोई एक पर्सन है हैरोल्ड, उसके बारे में बात होगी। हैरोल्ड के बारे में बात होगी और उसकी एक बुक है। उसकी कौन सी एक बुक है? उसकी बुक है क्राइसिस ऑफ द नीग्रो। क्राइसिस ऑफ नीग्रो के बारे में बात होगी। इज दैट राइट? उसके बारे में बुक हो रही है। अब ये बताया है इस बुक से, बुक के आने से ही बिकेम आइसोलेटेड। ही बिकेम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल। आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल, correct? Then they are saying originally, previously many thinkers disagreed. Many thinkers disagreed. ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसे थे। बहुत सारे लोग थे जो एक दूसरे से डिसएग्री करते थे। करेक्ट? सो एक बुक के बारे में है। ये बुक ने उसको, किसको? हेरोल्ड को सबसे आइसोलेट कर दिया। लेकिन पहले भी लोग बाग एक दूसरे से डिसएग्री करते थे। अब लिखा हुआ है he thought that activists who believe that black people such as himself should assimilate were naive. अब ये वर्ड naive का क्या मतलब? कौन समझाएगा वर्ड naive का मतलब? वर्ड naive का क्या मतलब होता है? Who will explain me the meaning of the word naive? Innocent. मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जो बोलते हैं कि black people should culturally assimilate। एक और assimilate का क्या मतलब होता है? assimilate का क्या मतलब होता है? This is innocent। assimilate मतलब mix। जो लोग कहते हैं कि ब्लैक पीपल एक कल्चर में मिक्स होंगे, तो बड़े इनोसेंट, कोई मिक्स होने वाला नहीं। Is that the meaning of the sentence? तो word is assimilate and innocent। जो बोलते हैं कि मिक्स हो सकेंगे, कोई मिक्स होने वाला। अब ये जो लाइन है, इस लाइन में ये बोल क्या करे? But he also criticized। इसने इसमें क्रिटिसाइज, किसको क्रिटिसाइज किया है बच्चों? ब्लैक लोगों को क्रिटिसाइज किया। He's criticized black nationalists, although he himself is black। Although he himself is black।
इसने ब्लैक लोगों को क्रिटिसाइज किया कि ये ब्लैक लोग सब बेकार, he sharply criticized, yes or no? इस लाइन में इसने क्रिटिसाइज किया, ये सारा अपन ने आइडेंटिफाई करा। अब मैं कोई बैठ के इतना सब लिखता नहीं हूं, लेकिन अभी समझाने के लिए आपको करना हूं। हाँ, अब चलो माधव, नाउ हेल्प मी, टेल मी कि व्हाई इज ऑप्शन ए रॉन्ग, उसमें क्या गलती है? Sir, in the first option, so the option says that, sir, about Crew's reputation, but sir, he said, sir, but he has criticized other nationalists. बोलो, टेल मी। पहले सबसे पहले ऑप्शन ए, आपने ऑप्शन डी क्यों चूज करा? आपने मेरे को एक ऑप्शन लिख के दिया, आपने सही ऑप्शन लिख के दिया है चैट में। आई होप आप आंसर्स नहीं देख रहे हो। अगर आंसर देख रहे हो तो यू आर फूलिंग योरसेल्फ। कोई भी आंसर देख के मेरे को जवाब नहीं देगा। ऑप्शन ए क्यों नहीं चूज किया? टेल मी, यू आर नॉट एबल टू टेल मी। कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटागोनिस्ट ओवर देयर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटागोनिस्ट? कौन समझाएगा मेरे को एंटागोनिस्ट का मीनिंग? चलो नेक्स्ट पर्सन ओवर हियर, कैन यू एक्सप्लेन मी द एंटागोनिस्ट ओवर हियर? नहीं ठीक है, एक सेकंड। अब आप लोगों को मैं आदत डालने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, आप लोग ये यूज करते हो कि नहीं यूज करते हो? मैं तो उसको बहुत ज्यादा यूज करता हूं। देखो कैसे यूज करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजिंग। अब मैं इधर यहाँ पे किसके पास जाऊंगा? मैं जाऊंगा गूगल बाबा के पास। गूगल बाबा, मीनिंग ऑफ एंटागनिस्ट। A person who actively opposes or is hostile to someone. Adversary. Correct? जो हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार है, जो हमेशा ना बोलने के लिए तैयार है, हमेशा hostile। hostile का क्या मतलब होता है? एग्री नहीं होता है। He is a main antagonist. तो जैसे आपने सही बोला, he is the villain of the problem. तो ये समझ में आया? चलो, अब he says A option में, why is A option wrong? So they are talking about deserving. It's given that other scholars are undeserved, and there is nothing mentioned about deserving. एक तो बेटा नहीं, आप गलती कर रहे हो। हमको सिर्फ इसके बारे में बात करनी है। Be specific. I am not talking about the entire paragraph. I am only talking about that underlined line. Underlined line में he is criticizing the black. In that underlined line, we are not talking about Mr. Harold. Are you understanding? The paragraph is talking about him. अगर एक मिनट के लिए मान भी लूं वो कुछ है, but why is this option wrong? Because in option A, we are talking about Mr. Harold. But we are wanting to know about the importance of this line. This line is only criticizing the black people, and that too is written by Mr. Harold. So that's why option A तो हो ही नहीं सकता। चलो मान्य बेटा, tell me why is option wrong? Yes, question. Sir, the board is not visible. Okay, sorry. Board visible करते हैं बेटा। Thank you for letting me know. कहाँ गया Zoom? हमको रिटर्न टू मीटिंग करना है, स्टॉप शेयर करना है, शेयर करना है, एडवांस करना है, ये करना है और ये करना। चलो हाँ, चलो बी बोलो मान्या, व्हाई इज बी रॉन्ग? नहीं, वो लाइन में वी आर क्रिटिसाइजिंग, and yes, it describes a controversy that Crew's work caused with the black national movement. Is that was a controversy you describe कर रहे? He only criticized. हाँ, correct? And कहीं पे हमको नहीं बताया है कि उसका criticism has led to a controversy. Yes or no? Yes. तो अपना बी स्पेसिफिक। कंट्रोवर्सी तो कहीं से कहीं तक हुई
चलो नेक्स्ट बेटा आपका टर्न. टेल मी व्हाई सी रॉन्ग. It describes the direction that proves where the civil right movement ought to take. यहाँ पे civil right movement की कहीं पे कुछ भी बात नहीं करी है. Civil right movement के बारे में तो बोला ही नहीं है. तो ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है. तो ऑप्शन डी क्यों सही है? ऑप्शन डी. Now this time you got it right, Rishikesh. So why did you choose option D right? It helps explain first question with respect to probability of same thinkers. तो हमको मालूम पड़ रहा है, does he agree with the black people? He does not. बोल रहा है. Yes. Is this line helping us to know? Yes, that he is critical of the black people. Although he himself is black, but he is criticizing the black. Is this line helping? So is that the purpose of this line? Why is this line written? It's helping us to know the Herod is criticizing the black people. Is this option correct? समझ में आया? Guys, remember those tips. Be specific. इधर आपको पूरे पैराग्राफ पे नहीं जाना है. किस पे concentrate करना है? Only the line, because he's talked about only the line. चलो, let's move on to the next question 3 पे जाओ. चलो, please go to question number 3. अब गाइस आपने देखा ये जितने भी मैंने क्वेश्चन पहले आपको करवाए 1 ये जो भी मैंने करवाए पहले 4 क्वेश्चन they were only talking about function. They were only talking about function. अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो. ये किसके बारे में बात कर रहा है? स्ट्रक्चर. तो देयर इज स्लाइट चेंज अपन को देखना है. पहले अपन ने पर्पस फंक्शन की बात करी थी, अब हम किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर. चलो पढ़ो. स्टार्ट रीडिंग. All of you start reading. Tanush, I can't see you. Tanush. Sangeeta ma'am. हेलो. हाँ सर. Tanush, you cannot turn off your video in between. ऐसे allowed नहीं है बेटा. Sir, I got disconnected, sir. हाँ ठीक है. चलो, make sure you are there with me always. चलो, we are now discussing कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? क्वेश्चन 3 डिस्कस कर रहे हैं. चलो, start reading question 3. गाइस, अब इधर अपन क्या नहीं आइडेंटिटी क्या ढूंढ रहे हैं और क्या करना है अपन को?
the answer? Got the answer? Got the answer? You've changed. एक, दो, तीन, चार, पांच. किसने नहीं किया आंसर? अयान खत्री, आरव आहूजा, आपका आंसर अभी आया. एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात. ठीक है. Who got a thumbs down from me? Who got a thumbs down from me? हाँ, so let's go back. चलो, अब अपन कहां तक आ गए थे? We had आपसे पूछ लिया था मैंने. चलो, अब आरव आपका नंबर आया. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को अपन करने की कोशिश करेंगे. चलो, आरव आहूजा, you are next on my line. Now, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है? पहले इसको आइडेंटिफाई करेंगे. इसमें हम पर्पस की बात नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर मतलब हमारे कान खड़े होने चाहिए. हमको इमीडिएटली किसके बारे में बात करनी है? हाउ के बारे में बात. करेक्ट. हाउ में हमने क्या बोला था? मोशन और फ्लो और रिलेशनशिप. मोशन, फ्लो और रिलेशनशिप, ये सब बोला था कि नहीं बोला था? चलो, अब इधर पहले समझने की कोशिश करते हैं. ये क्या क्या हो रहा है? एक मैथमेटिशियन, क्लाउड शैनन इज वाइडली रिगार्डेड एज फाउंडेशन. तो इन्होंने एक मैथमेटिशियन को क्या नाम है उनका? क्लाउड शैनन के बारे में बात करी है. ठीक है. हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, उनका एक पेपर के बारे में बात करी है. कोई तो भी पेपर है उनका, थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन का कोई तो भी पेपर है, उसके बारे में बात करी है. और फिर एक कंपनी के बारे में बोली है. कंपनी जो बोली है बेल लैब्स, के बेल लैब्स के बारे में बात करी है ना? इधर तो सिर्फ प्रेजेंट करने का. एक बाइनरी डिजिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी सिग्नल and determine the fastest rate at which information could be transmitted while still being reliably decipherable. So he utilized a concept called binary digit. और बाइनरी डिजिट को वो नेक्स्ट लाइन में क्या किया है? डिस्क्राइब किया. हाँ या ना? उस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया कि नहीं करा है? टू मेजर में डिस्क्राइब किया उसका यूज कि टू मेजर बाइनरी डिजिट to measure the amount of information in any signal and determine this. Yes? और फिर अब आ रहा है रॉबर्ट. एक और आदमी आ रहा है. रॉबर्ट क्या कर रहा है? रॉबर्ट उसको क्या कर रहा है? Bit was Shannon's discovery. From it, the whole communications revolving has sprung. रॉबर्ट इसको एंडोर्स कर रहा है. क्या कर रहा है? इसको एंडोर्स कर रहा है. हाँ यार, ये बहुत अच्छी डिस्कवरी थी और इसी की वजह से सब कुछ हुआ. यस और नो? said that the bit was Shannon's discovery. From it the whole communication revolution has sprung. अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है? स्ट्रक्चर बता रहा है. क्या चाहिए हमको? वाई नहीं चाहिए. हमको वाई नहीं चाहिए. हमको वाई नहीं चाहिए. हमको क्या चाहिए? हाउ चाहिए. हमको हाउ चाहिए. ये ध्यान रखना. चलो आरव, नाउ व्हाई डिड यू नॉट, चलिए, नो, व्हाई डिड यू नॉट चूज ऑप्शन बी? मेरे को बी बताओ. बी क्यों नहीं चूज किया? So in B, it talks about recognition, and in the passage, nothing about it is mentioned. एक सेकेंड. Let's say it names the company. Does it name the company? Yes, sir. It names the company. ठीक है. Where an important mathematician worked, वो भी पार्ट करेक्ट है. तो पहला वाला पार्ट सही है. Names the company. Yes or no? Next. Yes, sir. Details the mathematician's career at the company. Does it detail the mathematician's career at the company? नहीं. इसका सिर्फ नाम दिया था.
कोई करियर की डिटेलिंग करी क्या? तो सेकेंड पार्ट, करियर की डिटेलिंग करियर के बारे में नहीं बात करिए, कंपनी के करियर के बारे में बात नहीं करिए। नेक्स्ट, और क्या बोल रहा है? एंड प्रोवाइड्स एन एग्जांपल ऑफ द रिकॉग्निशन ही रिसीव्ड देयर। ही वाज एम्प्लॉयड, उसको वहां पे कोई रिकॉग्निशन के बारे में कुछ भी बात। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर दीज दी फ्लॉज? ये दो फ्लॉज हैं इसमें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? It's just named the company but did not talk about his career at that company, did not talk about recognition at that company. Yes or no? जो बात ही नहीं करी। चलो नेक्स्ट, यक्ष आपका नंबर सी बोलो। सी क्यों गलत है? So the passage focuses on Shannon's discovery, not that paper's findings and etc. It mentions a paper. It does mention a paper. Yes, पहला वाला ऑप्शन सही है। It mentions a paper. Next option, and presents offers a summary of papers finding. पेपर की समरी ऑफर करिए क्या? हाँ, पेपर के बारे में नहीं बोला है, एक सिर्फ टर्म के बारे में बोला है, एक सिर्फ टर्म के। तो पेपर की मेरे को समरी, पेपर की समरी मेरे को नहीं दिख रही, ये नहीं दिख रही मेरे को। और क्या नहीं दिख रही? रिसर्च कमेंट्री, किसी की कमेंट्री दिख रही है मेरे को? कमेंट्री भी दिख रही है मेरे को, किसी की कमेंट्री? हाँ, कमेंट्री ऑन दी पेपर। मेरे को पेपर की कमेंट्री नहीं दिख रही, उस टर्म की कमेंट्री दिखी है बाद में। ये वाले इन्होंने करा है, किसकी? रॉबर्ट ने, उसके बारे में। बट ही इज नॉट टॉक्ड अबाउट द पेपर, ही इज ओनली टॉक्ड अबाउट द टर्म। ये दो चीज नहीं दिखी, दैट्स व्हाई डी इज ये। तो मेरे को सिर्फ पहला वाला पार्ट दिख रहा है लेकिन दूसरा वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, दैट्स व्हाई बी इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई सी इज रॉन्ग। चलिए, अयान वारेकर आपका नंबर बोलो, ऑप्शन डी क्यों गलत है? सर एक्चुअली मुझे ये वाला समझ नहीं रहा, डी वाला, वही मेरा था। तो तूने फिर ऑप्शन ए कैसे सिलेक्ट करा? तूने तो आंसर दिया। मैंने आंसर नहीं दिया। आंसर नहीं दिया आपने। चलो, अयान खत्री, कैन यू टेल मी व्हाई डी इज रॉन्ग? Yes, sir. Sir, it does present a theoretical. It does not. It presents a concept which is theoretical. It's a theoretical concept, ठीक है। ये वाला पार्ट एक बार सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It explains the name. It's how the name of the concept. It does not explain how the name of the concept has changed. नहीं, एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं, it illustrates how the name has changed. Shorten to bit, एक मिनट के लिए बोलते हैं ना, एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं अपन। तो वो नेम चेंज भी सही है, चलो ठीक है एक बार। चलो नेम चेंज। Sir, but it has not entered the common usage. It has not shown where it is being used. It has just shown that it can help a revolution in communication. कॉमन यूसेज में एंटर हो गया और हम लोग रोजमर्रा की भाषा में बिट 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 बोलने लग गए हैं। एज इट टॉक अबाउट दैट गाइस, एक रिमेंबर, एक बात बोलिए, बी स्पेसिफिक, डोंट अलाउ इट टू ब्लर। अपन अपने मन से यार हम लोग रोज बिट बोलते हैं, इतना गीगाबाइट से प्ले हो रहा है, इतने बिट से, वो अपन लोग यूज कर रहे हैं, वो हमारे मन में। ये ऑथर हमको ट्रैप में डाल रहा है, क्वेश्चन ट्रैप में डाल रहा है। बट कॉमन यूसेज की बात उसमें पैसेज में कहीं पे भी नहीं करिए, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज अंडरस्टूड। चलो, ऑप्शन ए क्यों सही है? इट इंट्रोड्यूसेस अ रिस्पेक्टेड रिसर्चर। डज इट इंट्रोड्यूस द रिस्पेक्टेड रिसर्चर? यस, पहला वाला पार्ट सही है। डिस्क्राइब्स एन एस्पेक्ट ऑफ हिज वर्क, एक छोटे से एस्पेक्ट, एक छोटा सा एस्पेक्ट, यस करेक्ट। सजेस्ट व्हाई द वर्क इज हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट, भाई वो एक इतना सही, यस, तीनों चीज सही है, आया ना? Did you understand? That's why option A is आया समझ में? चलो, let's move on to question number 5. चलो, start doing question number 5. All of you start doing question number 5.
गाइस ये क्या पूछ रहा है? पर्पस, मतलब क्या क्वेश्चन आंसर करना है? व्हाई। ठीक है, कौन गया? तनुष रेड्डी गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अब अपन को समझना है। और गाइस मेरी बहुत ऑनेस्ट एडवाइस आपको रहेगी, जो भी सब लोग ये कर रहे हैं और जब लें आप ना, जब डिजिटल एसएडी भी लोगे, मैं क्यों इतना सारा डिटेलिंग कर रहा हूं, आप लोग तभी बहुत इफेक्टिवली कर पाओगे अगर आप चीजों को लिखोगे। मन में रहता है ना तो दिखता नहीं है, तो खटखट 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 के स्क्रिबल करने की आदत करो। एक रफ पेपर रखो अपने हाथ में और खटखट पॉइंट्स में स्क्रिबल मारो, जैसे मैं कर रहा हूं। इसी की वजह से मैं एक एक क्वेश्चन को कर रहा हूं। दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड ये लोग जानबूझ के ट्रैप डालते हैं, कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इंग्लिश में। 2-3 क्वेश्चंस भी आपके गलत हुए, खटखट पॉइंट्स गिरेंगे। हाँ चलो, आपको सबको आलस आता है ये करने में, बट ये करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर यू टू, दीज आर दी क्वेश्चंस व्हिच विल मेक अ डिफरेंस। चलो, एक ही का आंसर आया अभी तक, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है। चलो, आई विल गिव यू 1 more minute। चलो, let me just go through सबके आंसर्स आ गए क्या? 5 कौन सा वाला है आपका आंसर? ये चलो, इधर बहुत ही कम जनों ने आंसर किया है। इन दी ऑनलाइन वर्ल्ड में whom do I see? हाँ, पहले किसने आंसर किया?
हाँ, यक्ष, अयान, माधव, आरुषि. आरुषि, did you receive my answer? Tanush, Ayan. चलो सबके आंसर्स आ गए. So a lot of you did get it right. A lot of you did get it right. चलो कौन है मेरे पास सब नेक्स्ट? किसका है यहाँ पे? किसका नंबर है? मैंने कहाँ तक कर लिया था? आरव आपके साथ हो गया था. यक्ष आपके साथ हो गया क्या था डिस्कशन? Yes, sir. Yaksh, did you answer the previous question? Yes, sir. Ayan Varekar, आप? नहीं, आपने आंसर. अयान आपने आंसर करा था ना? अयान, you answered. Yes sir, I answered the last. ओके, चलो आरुषि आपसे चालू करते हैं बेटा. तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे चालू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट्स हैपनिंग? सबसे पहले क्या हो रहा है? लेट्स राइट डाउन. दे आर आस्किंग ओवरऑल पर्पस. पर्पस पूछ रहे हैं, मतलब हमको क्या आंसर करना है? वाई आंसर करना है, नॉट हाउ. हमको क्या आंसर करना है? वाई. अब हो क्या रहा है? एक कोई तो भी पोएट है. ये पोएट है, क्या नाम है इस पोएट का? मिगुएल अल्गैरिन. ये कहां के रहने वाले हैं? ये न्यूयॉर्क एंड प्योर्टो रिको. इधर के रहने वाले हैं. तो ये लोग अपने आप को क्या बुलाते हैं? ये लोग अपने आप को NUY ओरिकन बुलाते हैं. न्यूयॉर्किन. कि भाई हम न्यूयॉर्क और प्योर्टो रिकन के रहने वाले हैं. तो ये अपने आप को, जैसे कोई बोलता है ना अमेरिकन इंडियन, वैसे ही अपने आप को न्यूयॉर्कन बुलाते हैं. हाँ, न्यूयॉर्क और प्योर्टो रिकन के रहने वाले. हाँ, तो ये लोग क्या करते थे? गैदर इन एन अपार्टमेंट. ये लोग गैदर इन अपार्टमेंट में गैदर होते. फिर स्लोली क्या हुआ कि मूव टू अ कैफे. दे मूव टू अ कैफे. क्यों मूव हुए कैफे में? लार्ज होने लगा, तो दे मूव टू अ कैफे. करेक्ट. नेक्स्ट क्या हुआ? 10. तो ये कैफे वॉज बॉर्न. ये कैफे वॉज बॉर्न. और फिर क्या करने लगे? देन ओरिजिनल, उसके अपने स्कोप को बढ़ाया. ब्रॉडन दी स्कोप. एंड दे वर डूइंग मल्टीपल थिंग्स. आर्ट एग्जीबिशन, म्यूजिकल परफॉर्मेंस. हाँ, बहुत ब्रॉडन दी स्कोप, बहुत सारा. तो ये सब पूरा किया. अब लेट्स राइट डाउन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. हमको आंसर करना है व्हाई. ये लिखा हुआ है. अब ऑप्शन ए. चलो आरुषि गोस्वामी आपका नंबर. व्हाई डिड यू नॉट चूज ए एज योर ऑप्शन? Sir, it does not talk about the motivation algorithm had to find that cafe. तो यहाँ लिखा तो है एक गैदर करा, लार्ज हो गया, इसकी वजह से ऐसा हो गया. तो लिखा तो है. और क्या होता है मोटिवेशन? Why do you say what else? मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? तो ये इन्होंने क्या दिया है? ये जो रीजन दिया है इसको क्या बोलेंगे? जो इन्होंने दिया है वो मेरा, देखो. हाँ, मैं टीचर क्यों बना? मैं टीचर बना किसी को देख के मोटिवेट हुआ. मैं टीचर बना, मेरे 2 रीजन हो सकते हैं टीचर बनने. बाय वो क्या बोलते हैं ना, बाय कंपल्शन मैं टीचर बन गया कि मेरे को और कुछ भी नहीं मिला तो मैं टीचर बन गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और दूसरा, मैं इंस्पायर हुआ तो मैं टीचर बना. थैंक यू वेरी मच. हाँ, देखो मैं टीचर किसी से मोटिवेट होके बनता हूं. मैंने देखा यार तू बहुत अच्छी टीचर है, तो मैं तेरे जैसे बनना है. दैट्स अ मोटिवेशन. और मैं टीचर बना क्योंकि साला मेरे को कहीं और काम नहीं मिला, तो मैं टीचर बन गया. इधर इज देयर अ मोटिवेशन एंड दे मूविंग टू अ कैफे. दिस इज कंपल्शन. समझ में आ रहा है? अगर had they not used the word motivation, had they used some other word, then the option A would have been right. Correct?
I hope all of you. आरुषि समझ में आया बेटा? Yes, sir. So the word you are right. I just want to explain motivation. मेरे को कोई motivation नहीं दिखता. It was more of a compulsion. It was more of a compulsion. कि उनके पास कोई reason ही नहीं था, वो उनके पास जगह नहीं थी, तो बोले यार चलो ये पढ़ो. है ना? चलो. Who will be answering next? Tanush Reddy, it's your turn. Please tell me why is option B not correct? So option B is wrong because option B states that it describes New York's cultural life as a whole, but in reality, it's not describing as whole. Yes, it is describing, but it's not the only thing that it's describing. It's describing the founding of the Poets Cafe. To situate the New Yorker Poets Cafe within the cultural life of New York as a whole. He's not talking about the New York's cultural. He's only talking about the New Yorker वो cafe के बारे में बहुत बोल रहा है. But he's not talking about तो relationship. देखो जब हम उसमें बताया था ना, तो इधर missing what? Missing New York life. That's why this option is wrong. समझ में आया? चलो. Who's next now? Madhav, आपका turn आया है. Madhav, आपका कैमरा बंद है. Madhav Arora, are you there? Madhav Ahuja शायद नहीं है. He's missing. चलो बेटा, आपका turn. चलो, help me to tell me why is C wrong? Yes, sir. Madhav Ahuja आ गए. चलो Madhav. Sir, Madhav Arora. Arora. चलो मैंने अच्छा Arav Ahuja है. I'm so sorry. Madhav Arora जी बताइए sir. Why is C wrong? Yes. Sir, sir, the point discussed about the expanding of the cafe, but sir, in this in the passage it tells the history of the cafe, how it started from scratch. Yes, it does not tell why it went into music. Yes or no? Why it expanded? Why it expanded into others? ये नहीं बोलते. Others में क्यों expand हुआ? Does it tell you the why? No, I don't see the why. It just mentions that they brought it. It just states that they brought it, but it does not tell me why. So that's why C is also wrong. Let's read D. D says to provide an overview. Yes, it's provided me an overview. एक journey provide करी है मैंने. कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ. It provides an overview. तो पहला वाला overview is right. Founding and mission of the New Yorker Poets Cafe. Mission is कि ये Puerto Rican के ये इन सबको करना. आया ना? बस यही सब provide किया. This is correct. So the option is. Did you all understand? चलो. Question 6 करो बच्चों. चलो start reading question 6. बोलो बेटा. I would also not know. Let's read. Okay, she's asked a question. अच्छा ये तो आपने next question में से पूछा. American 7th. Okay, American 7th. पूछते हैं अपन. Stop share करते हैं. Share screen करते हैं. Basic में जाते हैं. Screen करते हैं. इसमें जाते हैं. इसको hide करते हैं. बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं. और फिर गूगल में जाना पड़ता है और गूगल में जाके यहाँ पे ये इसको पूछना पड़ता है मीनिंग ऑफ 7th. इसको टाइप करना पड़ेगा. A very learned or talented person, especially one who's distinguished in a particular field of science or arts. Okay, good. 7th. Distinguished person. Distinguished personality. That's the meaning of the word 7th. और guys ये आदत डालो. जैसे मैं कर रहा हूं. पहले हमारे जमाने में ना हमारी टीचर्स हमको कहती थी डिक्शनरी लेके बैठ के पढ़ा करो. अब आपको डिक्शनरी लेके बैठने की पढ़ने की
जरूरत नहीं है, गूगल बाबा को पूछना 2 मिनट में, गूगल बाबा बता दो। बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ, ये भी मेरे को नहीं मालूम है। कॉक्स कॉम्बिकल फेलो, कॉक्स कॉम्बिकल फेलो, कॉक्स मतलब मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ। कोम कैसे होते हैं, उसको समथिंग टू डू विद दैट होएगा, कॉक्स कॉम्बिकल फेलो, मेरे को भी नहीं मालूम। कॉक्स कॉम्बिकल, he couldn't get the spelling here. Did you mean cox combical? Yes, I meant cox combical. A conceited, foolish person. Cox combical. Cox combical. Conceited का क्या मतलब हुआ? छिपा हुआ. Conceited मतलब छुपा हुआ. तो मालूम नहीं है, लेकिन he is a छुपा हुआ foolish fellow. ठीक है? एक सेकेंड, तो ये कॉम्बिकल आया, हिडन फुलिश फेलो, मैं और सिंपल कर रहा हूं, हिडन फुलिश। नेक्स्ट, अब कौन सा शब्द चाहिए आपको? इन हिज लैपल, इन हिज लैपल, पूछो गूगल बाबा से मीनिंग ऑफ लैपल। Rabbit, according to Merriam-Webster, specifically, a part on each side of a coat or jacket immediately below the collar, which is folded back on either side of the front opening. ये समझ में आ गया? Collar, correct? हाँ? Part of collar. लेकिन अगर नहीं भी मालूम हो ये शब्द तो भी आपको समझ में पूरा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की वजह से समझ में पूरा आता है। चलो करो। ये मैंने इधर आंसर लिखे, जो ये शब्द अब इन्होंने मेरे से मांगे थे, तो मैंने इन सब के आंसर्स करे। चलो disdain, चलो करो। शेयर स्क्रीन, बेसिक, मीनिंग ऑफ डिसडेन, अनवर्दी, जैकनैप्स भी देख लें, बहुत सारे नए शब्द सीख रहे हैं अपन इसमें। अनवर्दी, किसी ने मेरे से जैकनैप्स नहीं पूछा।
इसके बाद पूछने वाले थे। चलो जैकनैप्स भी पूछ लेते हैं। मीनिंग ऑफ जैकनैप्स। डेटेड, चीकी, मंकी लाइक, पुराना सा, मंकी लाइक, चीकी, हाँ बंदर, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, अबे क्या बंदर जैसा दिख रहा है, हाँ। और कोई शब्द? बैंटर चाहिए, बैंटर का तो उन्होंने मतलब ही दे रखा है स्मार्ट को, फुल ऑफ स्मार्ट बैंटर। मीनिंग ऑफ बैंटर। Here's the definition of banter: the playful and friendly exchange of teasing remarks. Exchange of teasing remarks, जब किसी को मजाक मजाक में बात करते हैं ना, टीजिंग रिमार्क्स। चलो पूरा का पूरा बहुत सारे नए मीनिंग सीखे अपन। दैट्स आल्सो गुड। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो अब लेट्स गो बैक टू यू गाइस। आप लोग मेरा बोर्ड देखो, मैंने बोर्ड पे बहुत सारे मीनिंग्स लिख दिए हैं। देखो इधर इतने सारे मीनिंग्स लिख दिए। savant, distinguished personality, coxcomical, hidden, foolish person, lapel, collar, disdain, unworthy, jackknaps, dated, monkey-like, cheeky, banter, exchange of teasing remarks. चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। चलो डिड एवरीबॉडी आंसर इट? आया सबका आंसर? चलो आपको मिला आंसर या नहीं मिला? ओके गुड गुड। नहीं मिला बेटा आपका? गुड। चलो इधर देखें चैट में करीब 4 जन को मिला है आंसर। 5 जन को आंसर मिला है। 6 जन। 804 के बाद तो अयान, डिड यू गेट माय थम्स? वो मिला क्या आपको? यस सर। चलो किसका टर्न है अब? हु इज द वन हु इज हेल्पिंग मी? पहले अपन लिखने की कोशिश करते हैं। ये पूछ क्या रहा है हमसे? ये पूछ रहा है व्हाट इज द मेन पर्पस। पर्पस मतलब क्या? व्हाई। ये सुनो तो चलो हो क्या रहा है? Years ago, a grave American servant being in London observed। तो वो जो आदमी था वो खुद कौन था? The following text is adapted from novel The Confidence Man. Humphrey Davy was a prominent British chemist and inventor. इन्होंने हम्फ्री डेवी की बात करी है। Okay? Now, years ago, a grave American servant being in London। तो एक distinguished person, जो खुद distinguished person था, observed at an evening party there a certain coxcombical fellow। ऐसा उसने सोचा, बड़ा फुलिश सा फेलो वहां पे दिखा उसको। an absurd ribbon in his lapel collar, में कुछ तो भी उसने रिबन कुछ पहन रखा था, बड़ा अजीब सा कुछ पहन रखा था। and full of smart, whisking about to the admirations of as many as were disposed to admire। सब लोगों के साथ क्या कर रहा था? मस्ती कर रहा था, टीजिंग मस्ती कर रहा था। Yes or no? He was exchanging teasing remarks। जहां पे लोग बात थे वहां पे। Great was the servant's disdain। तो वो जो खुद जो आदमी था उसकी अनवर्दी सा आदमी है, तो मेरे सामने तो कुछ है ही नहीं, मैं तो खुद बहुत डिस्टिंग्विश्ड हूं। ऐसे ऐसे वैसे ही कोई आदमी बैठा है लोगों को चढ़ा रहा है। Great was the servant's disdain, but chancing air,
एक पासिंग, उसमें एयर साइट जैसे अपन देखते हैं ना, पासिंग साइट, ill prepared by the good sense of the jackknaps, but was altogether thrown aback upon subsequently being informed that he was no less a personage than Sir. एक पासिंग रिमार्क से मालूम पड़ा अरे कि भाई और उसको बड़ा कैसा लगा, खुद को बड़ा चीकी सा लगा। और यार सर डेवी है। कभी अल्बर्ट आइंस्टाइन को देखा है? उनके बाल और वो सब बड़े अनकेप्ट रहते थे। कोई उनको नॉर्मल अज्यूम करो, कोई नॉर्मल उनको फिजिकली कभी देख ले तो, या अपने जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आजाद साहब, हाँ या ना, उनको कोई देख ले तो लगे अरे बाप रे ये अब्दुल कलाम आजाद है, इतने बड़े इंडिया के प्रेसिडेंट या इतने बड़े वो। अभी रिसेंटली कपिल शर्मा शो में कौन आई थी? सुधा मूर्ति। और उसने ये बोला ना, उसके साथ कई बार ऐसा होता है कि वो लंदन के उस पे उसको बोला ये कौन है आप, तो शी इज द भाई यूके के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सास है, वो लिख रही है 10 डाउनिंग स्ट्रीट अपना एड्रेस, वो बोले तुम मजाक कर रहे हो। ये सुनो, इज दैट समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग? तो इस नॉवल में आर दे डिस्क्राइबिंग दिस काइंड ऑफ अ थिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? पूरा समझ में आया? चलो अब कौन हेल्प करेगा मेरी, किसका नंबर है? चलो कौन हेल्प करेगा? इसका नंबर कहां तक हो गया था? ये इसमें फिजिकल में आपका हो गया था, आपका भी हो गया था। चलो वापस आ गया नंबर। यक्ष आपका नंबर आया, चलो बोलो व्हाई डिड यू नॉट चूज ऑप्शन ए? So mainly in this passage, I have directly chosen option D by the last line. बट तूने ए क्यों नहीं चूज किया? वो तो डिसलाइक कर रहा है ना उसको, वो लिख रहा है ना he doesn't like him, वो लिख रहा है उसमें observed a certain comical fellow, लिखा हुआ है whisking. The last statement is easy, so I just directly chose the option D because there is a sense of misunderstanding. हाँ लेकिन एकदम ऐसे मत करो, great was the savant's disdain, वो उसको अनवर्दी समझ रहा है, लेकिन इसमें सब जगह वो उसको अनवर्दी समझ रहा है, उसको हिडन फुलिश समझ रहा है, बट क्या नहीं समझ रहा है? डिसलाइक की बात नहीं कर रहा है। देखो मैं किसी को हेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगा। डिसलाइक की बात कहीं ये नहीं कह रहा है, करेक्ट? सो द वर्ड डिसलाइक इज अ प्रॉब्लम। Had he used instead of dislike, had he used unworthy, option 8 सही हो सकता। yes or no? चलो अयान बारेकर, why is option B, why did you not choose option B? आपने तो गलत किया था ना अयान, आपने ऑप्शन क्या चूज किया था? Sir, I had chosen बी चूज किया था ना option आपने? B. हाँ. चलो बताओ आपने क्यों चूज किया ऑप्शन बी? इट पोर्ट्रेज द थॉट्स ऑफ अ कैरेक्टर हु इज एम्बैरेस्ड अबाउट हिज ओन बिहेवियर। Sir, because in the second last line, it says that he was altogether thrown aback. And above that, it also said that he was somewhat ill prepared. नहीं तो ये ऑप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, तो मतलब अयान वी वुड एग्री विथ यू, मैं ऑप्शन बी को इमीडिएटली रूल आउट नहीं करूंगा। ऑप्शन बी, इट पोर्ट्रेज द थॉट्स ऑफ अ कैरेक्टर हु इज एम्बैरेस्ड अबाउट हिज ओन बिहेवियर। डज इट लुक लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट? मैं अभी तो इसको डॉट बनाऊंगा यार, करेक्ट? मैं अभी इसको क्रॉस आउट नहीं करूंगा। चलो अयान खत्री बोलो ऑप्शन सी। Yes, sir. It is not option C because it doesn't show the history of the person becoming famous. It's just. तो ये हिस्ट्री फेमस ये तो कुछ भी बात नहीं कर रहा है, तो दिस इज अ वेरी इजी वन टू रूल आउट, ए और सी तो नहीं है। चलो आरुषि, व्हाई इज ऑप्शन ए और डी, पहले डी बोलो, दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग, व्हाई वुड यू चूज, व्हाई डिड यू चूज डी ओवर बी? बोलो व्हाई डिड यू चूज डी ओवर बी? बताओ आरुषि गोस्वामी।
Sir, it does portray the account of a misunderstanding because it mentions that he was bantering at the party and was shocked to learn that the guest was a prominent chemist and inventor. But why not B? He was not embarrassed about his own behavior. That line, but he was altogether thrown aback. He was thrown aback. But thrown aback का meaning आता है, he was shocked. He was shocked. He was surprised. He was, but never he felt कि मैंने कोई गलत काम किया है. एक और चीज, उसने ये सब मन में सोचा था. कहीं पे किसी को एक्सप्रेस, आप एम्बैरस कब होते हो कि यार मैंने बोल दिया, हमें तो क्या बुद्धू है, सर आपको सर हम पे सॉरी सॉरी मैंने आपको गलत बोल दिया. मैं मेरे मन में सोच रहा था अच्छा हुआ यार मैंने तुझे बोला नहीं. So I'm just surprised. I'm not embarrassed. Do you understand the difference between these? समझ में आया? तो वो जो मैंने शुरू में पावर पॉइंट में वो जो बनाया था ना, डोंट ब्लर, ये ब्लर कर रहा है ये आर्गुमेंट. ये क्या कर रहा है? ब्लर कर रहा है. He is making you think, overthink. नहीं, answer is D. Did you all understand? It's a difficult one, but good. अयान वारेकर, समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. चलो, next question number. अभी है क्या टाइम अपने पास? Do we have time for one more? Let's see. नहीं, टाइम खत्म हो गया. हाँ, चलो guys. I hope you enjoyed the class. Now the remaining ones will go out as homework. You would do it yourself. Have you understood the meaning of this? हाँ, in fact, ये वाला बहुत, मैं जितने भी 4 सेशन ले रहा हूँ, out of the 4 sessions which I'm taking, the first one, what was the one which I took? Remember? Quantitative evidence. बहुत वो relatively simple था. Quantitative evidence थी, ग्राफ आता था उसके अंदर, वो relatively simple था. Second वाला क्या लिया था? Inferences. Inferences भी relatively easy है. ये थर्ड वाला मेरे जो 4 सेशन है उसमें से मैं इस थर्ड सेशन को सबसे डिफिकल्ट मानता हूं. तो अगर आप जब एटलीस्ट जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो, यू कैन आइडेंटिफाई इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा यक्ष, आई वुड टेल यू आपकी अप्रोच में ऐसे वाले क्वेश्चंस में सारी चॉइसेस को स्ट्राइक आउट करो, नहीं तो यू मे मेक अ मिस्टेक. समझ में आया? यस सर. इनको डॉट बना लो और बाद में टाइम मिले तो इस वाले क्वेश्चन में आके स्ट्राइक आउट ऑल द ऑप्शंस. एक जो आपको ऑप्शन शुरू में सही दिख रहा है उसको सही कर दो, बट इसको वापस आने की कोशिश करो. आपके पास लिमिटेड टाइम रहेगा. एंड देन नेक्स्ट जो मैं सेशन 8 नाउ नेक्स्ट सैटरडे आल्सो नई क्लास में मैंने मनीष सर से रिप्लेस करा था. आज मनीष सर वाज सपोज्ड टू कम, बट मैंने मनीष सर को रिक्वेस्ट करा था बिकॉज नेक्स्ट मंथ आई एम नॉट इन द कंट्री. तो इसकी वजह से मैं चाह रहा था कि मैं पहले अपना पोर्शन खत्म कर दूं जिससे आपके बीच में कोई नहीं है. सो देन कंटीन्यूअस क्लासेस मनीष सर लेंगे. सो अभी नेक्स्ट सैटरडे का जो मैं सेशन दूंगा वो यू विल फाइंड इट रिलेटिवली easier session. It's comparatively easy, but this session was a slightly tough session. ठीक है? I hope you enjoyed the session. Thank you very much. Have a lovely evening. Bye bye. Good night. Thank you. Thank you. Thank you.